નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સેવા સમાજ ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે સમાચારમાં વાત કરીએ તો પીએમટી ડેપો તરફથી દત્ત મંદિર ખાતે પીએમપીએમએલ સર્વિસ રિટાયરમેન્ટ એસોસિએશનની મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં નિવૃત્ત કર્મચારીઓના હિતોને લગતા વિવિધ પ્રશ્નો પર ગંભીર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી। બેઠકમાં ખાસ કરીને કોર્ટના સ્પષ્ટ આદેશ છતાં નિવૃત્ત કર્મચારીઓનું પેન્શન હજુ સુધી શરૂ ન થવાના મુદ્દે રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો। સભામાં ઉપસ્થિત અગ્રણીઓએ પેન્શનની પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણ કરી નિવૃત્ત કર્મચારીઓને ન્યાય મળે તે માટે સંબંધિત તંત્ર સમક્ષ અસરકારક રજૂઆતો કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો। નિવૃત્ત કર્મચારીઓના અધિકારો અને કલ્યાણ માટે આગામી સમયમાં સંગઠિત પ્રયાસો હાથ ધરવાનો પણ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો। બેઠકમાં ભૂતપૂર્વ ડેપો મેનેજર અશોક ચૌહાણ, આઝાદ શેખ, કિશોર જોરી, દેવકર પાટીલ, શિવ નવગુણે, સલીમ શેખ, અશોક ગાયકવાડ, સંદીપ ક્ષીરસાગર, આરિફ શેખ અને સચિન ક્ષીરસાગર સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે સલીમ શેખ અને અશોક ગાયકવાડના જન્મદિવસની ઉજવણી કરી તેમને ફૂલોનો ગુલદસ્તો અને શાલ અર્પણ કરીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા। કાર્યક્રમ સૌહાર્દપૂર્ણ અને ઉત્સાહભર્યા વાતાવરણમાં સંપન્ન થયો હતો। आपल्याला पेन्शन द्यायला अवघड नाही, म्हणजे जुनी पिढी जवळजवळ संपलेली पूर्ण आले शेळशे आणि कोणतोड साहेब त्यांचे महापौर आपल्या बाजूने आहेत, स्थानिक कमिटी पण आपल्या बाजूने। आता उद्या मंगळवारी दुपारी 1 पर्यंत जमलं त्या लोकांनी, त्यामुळे तर पेन्शनला पात्र आहे। पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला पेन्शन नाही, हे भाग्यवान आहेत। आज आपल्याकडे आले, आज यांना पेन्शन चालू होणार, यांना फरक मिळणार, हे आपल्या संघटनेमुळे, आपल्या एकीमुळे आणि आपली भावना चांगली आहे। कसे पैसे न भरता पेन्शन कशी चालू करू, कारण माहिती आहे का, 26 मार्चला आपला निकाल लागलेला आहे। 26 मार्चला, आता 26 मार्च नंतर 26 मे 1 बरोबर आहे, 26 जून, हा म्हणजे एप्रिल, सॉरी जुलैला 4था, त्याच्यामध्ये सगळ्या हालचाली झाल्या पाहिजे। खात्याची ऑर्डर, प्रॉव्हिडंट फंडाची मागणी, हे सर्व काम प्रशासनाचं आहे। अडचण काही नाही मित्रांनो, अडचण काही नाही, कारण 71 लोक आहेत। आधीच्या लोकांना पेन्शन मिळते, त्यातले फक्त आता 600 लोक राहिले। 11 साल को रिजल्ट लग गया, 13 को पेंशन देने का फैसला इंडस्ट्रियल कोर्ट ने दिया। उसके बाद हमारा प्रशासन हाईकोर्ट में गया, उसका निकाल अभी 26 में लगा। उधर 15 साल हमारी केस चालू थी, वो भी निकाल हमारे बाजू में ले गया। और जो खाते का जो एप्लीकेशन था उसने वो रद्द कर दिया। 6 महीने के अंदर पेंशन चालू करो, वैसा आदेश दिया है। जो हमारे खिलाफ के जो लोग गए थे उनके एप्लीकेशन उन्होंने रद्द की। ऐसे 5 इसमें उन्होंने उनका गोडबोले का जो कोर्ट है उन्होंने उनका फैसला दे दिया है और 6 महीने का मुदत दिया है। अभी 2 महीने हो गए, सितंबर को एंड होने वाला है। कंपलसरी है, पैसे का बहाना उनको मंजूर नहीं है, वो भी उन्होंने बता दिया। और पीएमटी के पास पैसा है, जो कुछ लॉस होता है वो दोनों महानगर पालिका उनको देती है। स्टैम्प है बॉम्बे हाई कोर्ट। देखो अभी हाई कोर्ट का फैसला कैसा, देखो ये 5 उसके पॉइंट है, ये उनका स्टैम्प है बड़ा हाई कोर्ट का। हाँ हाँ ये भाई आगे हाँ, अभी नहीं।